Hello friends, welcome to my channel. So in this video, I am going to discuss about the velocity. ठीक है? So यहाँ पे हम लोग velocity के बारे में discuss करेंगे. So what is velocity? जो definition यहाँ पे given है, it is that the rate of change of position of an object with time in a given direction. It's called the velocity. So the important point is that it is in a given direction. ठीक है. सो वेलोसिटी का क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ इन ए गिवन डायरेक्शन, देन वी कैन से दिस इज द वेलोसिटी. सो व्हाट इज द फॉर्मूला इज द डिस्प्लेसमेंट पर टाइम. सो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर टाइम बोलते हैं. अगर याद है हम लोग ने स्पीड जो डिस्कस किया था, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस पर टाइम. And in case of velocity, it is displacement per time. So what is the difference between distance and displacement? That thing we already discussed in my previous videos. Okay. So please go through this videos channel and watch all the details of the displacement and distance. So displacement क्या होता है? Basically displacement होता है the difference between the initial and the final position with proper direction. But distance is that in that case there is no difference. It means that it is only the total path traveled by the object. ठीक है. लेकिन velocity में direction terms है, इसलिए it is the velocity the displacement per time. What is displacement? Displacement is the difference between initial and the final position in a proper direction. What is the unit? In SI unit meter per second. In CGS unit it is centimeter per second. तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर और सेंटीमीटर और टाइम तो सेकंड. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इट इज द वेलोसिटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज द डिस्प्लेसमेंट पार्ट टाइम. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द डिफरेंस बिटवीन और द पाथ ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लेंथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड इट हैज वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. Now the displacement are also in some categories. The first category is velocity, uniform velocity, uniform velocity. So what is uniform velocity? So uniform velocity is that equal displacement with equal time interval. So इसका मतलब है हम यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. सपोज ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट. ठीक है. अगर पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इसका डायरेक्शन अगर ये डायरेक्शन हो रहा है, इसका डिस्टेंस में भी 1 किलोमीटर, सेम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3 का भी 1 किलोमीटर, एक ही डायरेक्शन. पॉइंट 3 टू पॉइंट 4 सब इज आल्सो 1 किलोमीटर और उसका भी डायरेक्शन अगर सेम ही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है एंड ऑल द डिस्टेंस बिटवीन 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4 are same and if it carries maybe 5 minutes, if point 2 to point 3 it carry again 5 minutes and if it is also 5 minutes, then it means equal displacement. This is equal displacement, this is also equal displacement with equal time interval. Then we can say this is the uniform velocity. ठीक है. देखो यहाँ पे ये पोजीशन से ये पोजीशन का डिस्टेंस यहाँ पे 1 किलोमीटर है, इसका भी डायरेक्शन ये है, यहाँ से इसका भी 1 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन, 1 किलोमीटर सेम डायरेक्शन और सब जो पॉइंट है पर किलोमीटर कितना टाइम यूज हो रहा है? 5 मिनट. It means equal displacement with equal interval of time, then we can say this is the uniform velocity. Okay. Now the next is variable velocity. So यहाँ पे क्या हो रहा है? equal distance with equal time. अगर variable velocity का एक पॉइंट यहाँ से 2 यहाँ 3 तो सपोज मैं
फ्रॉम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जा रहा हूँ, उसका में भी 1 किलोमीटर हो रहा है ये डायरेक्शन में। पोजीशन 2 से पोजीशन 3 में भी 2 किलोमीटर, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। सेम पोजीशन 3 से पोजीशन 4 में भी 5 किलोमीटर, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसमें भी 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। सो इट कवर्स वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो पहले फर्स्ट पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ये डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 का डायरेक्शन चेंज हो गया, उसका लेंथ भी चेंज हो गया ये डायरेक्शन में। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 उसका भी डायरेक्शन चेंज और उसका भी लेंथ चेंज हो गया, 5 किलोमीटर हो गया ये डायरेक्शन में। सो इफ इट वेरिएबल displacement with equal interval of time, then we can say this is the variable velocity. Variable displacement with equal time interval. So what is variable velocity? Variable velocity means variable displacement with equal interval of time. I think you understood. समझ में तो आ रहा है ना? जैसे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का ये डायरेक्शन है, 5 मिनट लग रहा है। पॉइंट 2 से मैं पॉइंट 3 जा रहा हूँ, उसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया। इसमें मुझे भी 5 मिनट लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो गैप है वो 2 किलोमीटर हो गया। पॉइंट 3 से पॉइंट 4 5 किलोमीटर टोटल लेंथ है, यहाँ पे मुझे 5 मिनट लग रहे हैं। इट मीन्स मेरे यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो यू कैन से दिस इज द वेरिएबल वेलोसिटी। बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो रहा है, एक ही टाइम एक ही डिस्टेंस कवर हो रहा है। सो यू कैन से दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज and now is average velocity. So average velocity means the total displacement by the total time. So I think you understood what is uniform velocity, what is variable velocity, and what is average velocity. Uniform velocity means it covers equal displacement with equal time. The variable velocity means it covers variable displacement with equal interval of time. And the average velocity means it is the total displacement by the total time. So what is the actual difference between the velocity and the speed? The speed has the distance per time, but the velocity has the displacement per time. In the distance there is no direction, but the displacement has the proper direction. So the velocity and displacement both are depends on the direction. So I think you understood what is velocity, what is uniform, variable, and average velocity. So thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel to get the more updates. Thank you.